So, good afternoon, all of you. Welcome back. Sonia ma'am, can we start? So now this session will be on grammar portion. Miss Sonia Behel ma'am, she is with us. Now she will be taking the session. Sonia ma'am, can we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you. A very good morning to all of you. Am I audible now? Yes, ma'am. Good morning. Very good morning. I'm going to start with grammar today. And as you all know that grammar has been taught since a long time, and before 1947, before independence, it was not considered to be a separate entity. Literature was focused on more because British literature was considered to be more valuable, and they wanted to pass on their own ethics and values. And so language was mentioned in sedentary role of a teacher and learner, and it was not very much defined also. And gradually in 1947 till 1980, English for linguistic purposes came into being, and grammar began to dominate the classroom approach. And structural or situational approach institution for English came up, focus now on methods of teaching and training. More of trainings were taken up, and more focus was done on grammar. And now the same thing is being done right now also in the third phase, but emphasis is more now on the message rather than the medium. they they don't want that the grammar should be absolutely correct, but the message should go. That's what has been done up till now. Why grammar? Language is the biggest gift that our ancestors have given us. It is the language that helps us express ourselves in a clear and structured way. And to know a language well, we must learn how it functions. And this is precisely why English grammar is taught at school level from an early stage. The knowledge of English grammar is all the more necessary as it's a foreign language, and our students have very limited exposure to its functional part in the societies where they live. The children are coming from families which do not speak even a word of English at their place, and they are being taught English language. It's totally foreign to them, and they do not get any practice of it also. Why is grammar important? Grammar is important because it is the language that makes it possible for us to talk about language. People associate grammar with errors and correctness, but knowing about grammar also helps us understand what makes sentences and paragraphs clear and interesting and precise. English grammar is an important subject which teaches us how to read, write, and speak English. Any language is well written and well spoken only if we know its grammar, whether it is English, Hindi, or any other language. Students have been taught with English grammar for class 6, 7, 8, 9, 10th. Even in the small school, children have been taught grammar, but only noun, verb, such sort of things were taken up. Grammar is a subject that stresses many students. It's confusing and complicated for them. However, correct grammar is like writing, and both as a student, as a future employee, it is thus crucial to know some simple methods to improve your grammar skills. And here are certain methods which can help us do it. First is read.
Reading may be the number one way you can improve your grammar skills. When you reinforce correct grammar in your mind. It can be particularly helpful to read out loud as a combination of seeing, saying, and hearing assists in solidifying what you have already learned. In addition to improving your grammar, reading will help with all aspects of your writing, from sentence fluency to increased vocabulary. I think everybody will agree with this. Can I have some Yes, answers? Don't you think reading is the best way you can improve your grammar skills? Hello. Another thing you can do is get a grammar manual. It is useful to have a thorough reference book nearby that you can consult when writing. This way, anytime a grammatical question arises, you can quickly refer to the manual to obtain the answer. There are many high quality grammar and writing guidebooks on the market. Speak to a librarian or writing instructor for recommendations. These days, you have very good things on the thing, mobiles as well as your laptops, where you can guide yourself, help yourself, and learn better. Review the basics. Third point, while classes in English linguistics and writing may not be something you are interested in, it is vital to spend a bit of time learning or reviewing the basic principles. Do some research on the basic parts of speech, as well as on the common grammatical errors people tend to make. Here are some simple ways to improve your writing skills. What grammatical errors do you see generally in us? Hello? Hello? Can you hear me? yes, ma'am. Most of the time, students are not able to place the correct form of verb while speaking. So they're not able to decipher whether the sentence is in present tense or past tense when they're speaking. This is the most common mistake they make. Yes, definitely. And also, we see that they are not willing to put the things right. Even when the jumble sentences come or something like that, like Ila ma'am was talking about, it's difficult for them because they do not know exactly how to place them. Yes, ma'am. This is the reason they're not able to correct the grammatical questions that we have in their paper, error correction. They're not Yeah. able to know which word is wrong and which is to be replaced. Yes, very right. Then the fourth point is practice. There are many excellent resources, both online and in print, which helps in improving their grammar skills. A quick internet search will reveal a multitude of websites that offer grammar games and exercises. You won't believe, but I still try and attend all the grammar classes I can, because I feel that you really need to learn every day. You tend to forget also. The best thing is to keep on revising. Even if you think you know it, you should keep on revising, because otherwise you tend to forget what you have already done. If you know that grammar is an area you struggle with, set aside a few minutes each day to complete grammar exercises. Even the simple act of taking a few English practice tests of any level can help you improve your grammar skills. It's very good. Even in earlier in newspapers, they used to have crossword puzzles and things like that. And if you keep doing all this, then you keep remembering the things which you learned in your earlier years.
Otherwise, we tend to forget such things and they go back, because the crowd we are getting, the children we are getting, they do not get that much opportunity to speak in English at home. So the more we can, talk to them and explain to them, the better it is, because otherwise we also lose track of what we have learned. Listen to others. When instructors, writing lab staff, or writing tutors give you feedback, listen to them. Find out if you have a consistent issue with any topics in particular. For example, do you frequently receive feedback regarding run on sentences or have issues with subject verb agreement? If so, make sure that when you proofread your assignments, you pay special attention to those details. It may even be wise to create your own personalized checklist of items to be aware of in your writing. And the sixth is proofread out loud. Sometimes, when we reread pieces we have written of missing information, we do not always catch our own mistakes when we proofread. Reading what you have written out loud, preferably to someone else, is an efficient way to evaluate whether or not you have used correct grammar. Especially when we are writing very fast, something we are copying from somewhere, or just noting it down while we are hearing it, there is a chance that we do not write in correct grammatical order. So when we read it out aloud, we know that we have made some mistakes, so we can correct it then. But if we just read it silently, then it does not come out that well, and we keep on making mistakes. You are more likely to notice your errors if you read the content aloud rather than in your head to yourself. Am I making sense? Then the seventh is write. Just as it helps to read a great deal, it will also benefit you to write. The more you practice writing with proper grammar, the more naturally it will come to you. Do you want to say something? These are great tips to help you with writing a college essay. Students from any age can benefit. Sorry, just a minute. To enhance their grammar, use the above methods regularly and you will greatly improve your grammar skills before you know it. Some research theory and the following principles have been proven to be more effective than teaching grammar as a separate subject. We in class do have grammar classes. We have a separate workbook for it. But the children learn better if you keep on making them revise through their lessons also. Include reading and writing, both. When they're reading, you have to point it out that this is what is being specified, that this is a noun, this is a verb, this is, so that they get into the habit of it, that this comes after this, and this is how a sentence is formed. Students should self-assess their own work. They should be allowed to self-assess. Combine sentences meaningfully. They should also learn to combine sentences meaningfully. Use mini lessons
and also literature for grammar. We are using literature for grammar because whenever we are teaching literature, we also try to focus on certain grammatical um, sentences also, that this is the way it is being spoken, so the children become quite familiar with them. Types of questions we have in grammar are gap filling, error or omission, sentence reordering, and transformation of sentences. To get started, we should make extensive use of the textbook. We can use anything, use wrappers, pamphlets, anything which comes in handy. Like children are always coming to school through a route. So we tell them to see all the pamphlets or whatever is written on the roadside, so that they get interested and they start reading out and forming sentences on their own, and trying to understand also, because there are pictures also along with it. So they start learning how to read there itself. Pick passages from the newspaper. These days, a lot of newspaper reading has been encouraged because uh, newspapers are easy to uh, get, and they are a little cheaper also, and they are providing newspapers for the schools themselves. So children are interested and they read something um, out from their own course. Use textbooks of other subjects also. Generally, in an English medium school or in the English medium class, we have other subjects also in English, so they can take the help from other subjects also. If they try and read everything in English, then they will learn better and they will understand better. Examples from the textbook. Read the following carefully. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge. Now you have to fill in the gaps. Who will do it? Will anybody opt to do it? Aruna ma'am? Ma'am, Yes. first faced The sun was now ascending, the sky blazing on his ledge that faced the south. faced the south. He felt the heat. He Because felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, and he the brink of the ledge. yes, very good. Thank you, ma'am. Finding an error, read the following carefully. You have to find the error. I started right away at the Montessori's nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. There are lots of mistakes in this. Please, can you point it out? First, right from, not away. Yeah, I I started started. right from.
right from the Montessori nursery school. Hmm. I stayed there until I was 6. At that time, until or till I was 6. Hmm. At that time, Hmm. I started in the first. This is something which is not right. I started in the first form. Yes, there is mistake. Yes. I still do. We can get the feel whatever is being said, we know that what is being said is right, but the way it is being said is not right. The grammatical Yes, errors are there, but we can get the gist of it, that that person was in Montessori nursery school, and till 6 years he or she had finished the first form, and in the sixth form, who Started. was the teacher? Mrs. Cuperus, the headmistress. And at the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. So there are lots and lots of errors in this. at that at that time I had started in the first form. Yeah. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. When I was in sixth form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. At the At end that of the at, year, we both were in both should tears, be with we both were in tears and as we bid a heartbreaking farewell. yes, thank you. Welcome, ma'am. Now there's another exercise. You have to write the incorrect. We generally have this in the 10th, 9th and 10th class. I started right away on the Montessori nursery school. I stayed there up till I was. What is wrong in this? Incorrect in this? I started right away at the Montessori nursery school. Can I have an answer? What is wrong in the second line? Ma'am, I stayed there till I was 6. In place of Yes. up to, it's till Yeah. I was. Up till will be till. At which time I started into the first form. Third line. In the third line, there should be that at that time. At that time, I started into the first form. On the sixth form, my teacher was. In the sixth form. In the sixth form, my teacher was. Mrs. Cuperus, the On headmistress. Hmm. For the end from the year, we were both in tears. At the end End of the year, of the year, we were both in tears. At the tears said a heart breaking farewell. So, how do you think the children are going to get into this? How are they going to solve it out? How are we going to help them do this? Ma'am, usually we have different grammar syllabus, and then we have this, right? Yeah, We teach them prepositions and other things, and then in exam they get these kinds of questions. They yeah. are not able to relate that grammar knowledge to this. Yes, that is what I'm So, trying to bring it out, that even
though we keep teaching them throughout this 4 5 years, but still when they come to class 9th or 10th, they are unable to do anything in it. Yes, so it is very difficult for them to apply that knowledge of prepositions and nouns and verbs and whatnot when solving this particular question. So what I do in my classes is I make them practice and then ask them to derive their own rules. For example, if there is, say, a vowel sound, you will have to use an in place of a. If there is a particular a special line, you will have to use the. So in a way, the more you practice, the more accurate you become at these things. Because I have tried it a lot of times. They are never able to apply their separate knowledge of those grammar rules to this. Yes, I even I have tried enormous times, but nothing like this happens that they are doing all of them correctly themselves. Yes, That's a, so the more in a way this, practical way would be to make them practice these kinds of examples as much as possible, so they get a sense of a correct sentence. We can do it via reading also, like yeah. we need to read and so that they get a sense of what a correct sentence would be, rather than asking them if there is a preposition there, correct it. They're never able to find it. For me, at least, it has not happened yet. Yeah, even in my class, they don't remember what is preposition, what is all these nouns, verbs, but they know See, exactly, you know, like, that yes, that is always even happening. That, yes, ma'am. Even a very simple topic like subject verb agreement. The moment you tell them, "Oh, this is subject verb agreement. We are going to do a grammar topic today," all of them are intimidated. They think as if this is yes, something not related to their syllabus, and it will be very difficult for them to understand. But what I did in my class was, once I started teaching the subject verb agreement without telling that this is actually subject verb agreement. So they're very afraid of these terms, the terminology, grammar, definitely. perfect Mm. tenses. What are these? We don't know. This, in a way, get intimidated and then they don't pay attention to class at all. This is something I have experienced Even I have personally. experienced the same, and you won't believe that in our times we never used to have grammar separately. Like in grammar paper, we used to get only essays and letter writing and all that, but we never got proper grammar questions like you have to underline this and you have to do this, may take out the mistakes, nothing like this. So when I came here, I got very scared myself. So it was difficult for me to communicate this to the children also. So after reading so many times, I still feel that yes, I need to revise a lot to be able to tell them. But speaking is not that difficult. Coming with it right is not difficult, but pointing out exactly what is the mistake is really difficult. And that is what I think the children also feel. Reordering. Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress. Vanda said she had 100 dresses. Now you have to reorder the sentences. You've read the chapter. Are you aware of the chapter? Yes, ma'am. The Yes, 100 ma'am. dresses. Ma'am, I think these are correct sentences. I don't find any mistake in them. Wanda didn't have any friends. I think it's correct. Vanda didn't have any friends. Um First, first sentence should be Wanda came to school alone and went home alone. She didn't have any friends. hmm. She always wore a faded blue dress. Oh, like And that. she, Yes, yes, I got it now. Sorry. Yes. Yeah, you have to just order it. It's almost like all the points are very clear, but they do not, you don't remember which will come after what. Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress. Wanda said she had 100 dresses. Hmm. So, ordering for children would be also difficult if they have not read the lesson recently.
Then we have make meaningful sentences. Now, what we do generally is in the class itself, when we have a lesson in front of us, we try to make these jumble sentences there itself and try the children to make the meaningful sentence out of it, so that they get the hang of it and they can see what they are, where they are making any mistake. So generally, we have to give them a lot of practice to make meaningful sentences, because I found that even class 10 children are not able to do this correctly. I've checked so many papers, but I don't think so anybody can help them out there that way, unless until we make them do it regularly with the sentences in their books itself, in their literature book. Can we have the first one? Aruna? Aruna? Yes, Yeah. Can you solve the first one, please? Panda didn't have any friends. Yes. The second one, who's gonna solve? Supriya? Yes, ma'am. She came to school alone and went home alone. Great. Who else is? I can't see any names actually. That is why I'm not able to. Ma'am, third is she always wore a faded blue dress. Wanda said she had 100 dresses. Hmm. Actually, what we are doing here is we have taken a few sentences, and those are the sentences which we are trying to do in all the exercises. You've seen this? See, earlier we had this same. We reordered it. And here also, no. Now, what we can do is we can develop a few activities. Do you make foldables? Have you ever made foldables? With a piece of paper, you fold in such a manner that all the things are visible. Have you all ever tried it out? We can do it in our practical part. It's very easy and children love it like anything. And chit and cards, this you must have done. You must have made certain cards. What we generally do is we make a card of some of the difficult words from the lesson, which we want the children to learn and know their meanings and everything. And that can be used repeatedly. And you can ask them to make sentence. You can ask them to tell the meaning of that card. Whatever you ask the child to pick it up, so they enjoy the game and they'll try to learn it also, so that they are able to speak when their chance comes. Then there is a ball game also. What do you do with it? You have a ball with you. You throw it to the child. He answers whatever you have asked and throws the ball to the next child. That person is asked a question and that person answers. So this way, it's a sort of a game, and children love to do it and enjoy themselves a hell of a lot. Then we have a circuit activity. As the name implies, in this activity also we have a group in which we discuss a certain
We'll do all these activities in our activity time. We have another period, I think another session with you. In that, we will try and do these activities and see how it comes out. And you will also learn a few things. You can also think of certain things to tell me so that I also learn from you. We have listening and speaking activities also, following instructions, conversations, show and tell. You give them something and they have to just show and tell about it. So the thing is that they develop speaking ability also, and grammatically we can correct them also. Learning English grammar will help students to boost their confidence while speaking and writing. That we know. Here we have explained the grammar in a very simple and short way, which will help students to remember the rules. Students can practice grammar with a variety of examples and implement it in their real life as well. What we should do is pick only one grammar area at a time initially. Like we are teaching noun, then we should focus on noun only and give them some time to just know about it, just learn things, and then we start doing proper noun and common noun and things like that. Slowly we try to increase the uh, number of concepts we give. But the thing is, at one time, only a small grammar portion should be done, so that, and it should be kept revised. It has to be revised regularly. Make it progressive, combining 2 or 3 areas. Once we have done the separately all the nouns, then we can combine them. Do that for another week. Practice all types of questions with the specific area. All types. We have to cover everything so that whatever can come in the exams, whatever can be asked, they know how to solve it. If taking prepositions, design questions around prepositions only. Now, may I have your attention and you tell me what would you like in your other grammar class and what you have not understood here, or what you want me to take up in your other grammar class. That will be very useful for me also. Please, can you tell me? Hello. It was good, ma'am. No, what you would like me to take up in the next class? Topic. Yes, which we can do it, and That is integrated grammar. That is the topic in 9th and 10th standard. yes, integrated grammar is there, but what exactly would you like me to take up for practical purpose so that we can do it in our classes? Yeah. Change the voice and direct speech, indirect speech, narration. Okay. That's a good suggestion. And now we have to see rather that emphasis has to be on appropriateness rather than on correctness. Use and usage. Appropriate use of language and usage refers to referring to correct use of language.
fluency rather than accuracy, communicative competence rather than linguistic competence is focused on these days. We all know that the children are speaking, but they're speaking like this. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. But they are at least trying. If they are trying, then we have to encourage them. We don't have to say anything to them that might um, make them feel that they have been scolded or something like that, so that they do not attempt even. So we have to be very careful. Whatever they're doing, we have to encourage and gradually take them to the uh, make them learn how to write proper English. So as long as they are writing something, it's very good that they can at least present something to us and we are able to help them. And next is that we should also do one thing is never make fun of children who speak language. Like generally what happens is children try it out, and what happens that other child starts laughing that she's spoken something wrong or he's spoken something wrong. So what has to be done is that we have to discourage this sort of a behavior, and we have to encourage children trying to speak in class. If they try also, we should encourage them, and we should uh, give a pat on the back, because it's difficult for them right away learning, because they do not have anybody to help them out at home also. So it's our duty to encourage them and help them alongside. Should encourage language variations. Teachers will not be dissuaded to use mother tongue to make communication very clear. So even if you have to use your mother tongue to help them learn something, it is always allowed. It is not said that you are not allowed to do that. But the more we speak in the language, the more the children hear, the better it is for them. That's my personal view. But I think we have to use certain words in Hindi, because children are unable to understand everything in English. Even if you say this word Montessori nursery school, I don't think so Montessori word will be that familiar with them. What do you say? I'm not getting any response. Supriya? Yes, ma'am, you're right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are certain words which we feel that the children are not familiar with, and so they do not get to know that word so well. So we have to translate in Hindi, don't we? Yes, yes, we have. Yes, ma'am. We have to translate. It is very difficult to not use Hindi, because then everything becomes so difficult for them to understand. What I do in my classes is I first give them a summary, a short summary in Hindi, and then I have also started doing one more thing. What I do is I speak in English Hmm. the entire thing, like a short summary, and then I ask them to translate it for me in Hindi, so Yeah. that I get to know what is their level of understanding when it comes to this language. And for difficult sentences, for difficult words in a particular paragraph or say a chapter, I try to give them a very easy meaning in English itself. And when even that is not working, then I give them a Hindi meaning. Yeah, definitely. That is very helpful for them. Actually, what I used to do is I used to do storytelling in my own way. Like I used to enact most of it. Whatever could be enacted, I used to enact that portion, and so made them understand what I'm trying to say. So that ways they used to really enjoy also, and they used to learn also very fast. Yes, Like yes, ma'am. uh, In 6 to 8, this works a lot. yeah, Uh, this is really they're helpful. able to catch more of your expressions than what you are saying. Yes. So it works with young kids.
Yes, and once they know the words, because you keep saying them again and again, and then you ask them to make sentences and things like that, then it becomes, a sort of, um, they have it in their saying vocabulary then. So it is very easy to communicate after that. So I have tried it out so many times, and the children love it like anything. They just want me to come into the class and start teaching them. So so that is also a very good way to make them learn. Yes, ma'am. Because if we start using a lot of Hindi in the class, then the thing is that the children are so dependent on it. Even in class 9th and 10th, they have that Hindi translated books. They do, ma'am. They do. In place of their original books, they have these kinds of books with them. Yeah, and that is the worst thing, that they read only the Hindi portion. They do not bother about the English portion. And when it comes to the questions, they do not know what to write, Yes, and especially in then the they ask papers. you to, yes, and then they ask you to translate it in Hindi for them so that they can write or Hmm. whatever they can. Hmm. Yes, it happens a lot, ma'am. Yeah, so we have to discourage them to use that Hindi version also, and try and make them do it themselves, because if they do it themselves, they're going to learn. If we read it aloud and we ask them questions, it's not going to help out. That's what I have found, that once you make them read it out, you make them talk to a few children among themselves, and they try to find out the answers. That is very helpful. Otherwise, they do not bother also. Yes, ma'am. So it was lovely talking to you all. I think my time is also up, and hope you all do much better than what I have been doing. And all the best. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving us a very beautiful session. Thank you, Sonia ma'am. And again, ma'am has taken a very good session, and it was quite informative, and we really enjoyed it a lot. Now we have with us Mr. Parne, and he'll talk about happiness curriculum. So now we are not giving you any break, and we are directly starting with a new session so that we can finish on time. So I request Mr. Parne to introduce himself and start his session. Over to you, Parne sir. Thank you, ma'am. So, I guess, can I share my screen? Yes, I can. Just a second. So, thank you, ma'am. And hello, everyone. Good morning. कैसे हैं आप लोग? Good Hello, afternoon, hi. sir. We all are good and enjoying a lot with you all. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. So, thank you. So, how many participants we are with us today? कितने लोग हैं हम लोग? 43. 43. Okay. Yeah. Thank you. तो सभी लोग ऑन कॉल हैं, थक गए हैं, ध्यान ध्यान डाइवर्ट हो रहा है. एक बार यस नो या चैट पे यस नो लिख दें. आर बी टुगेदर? सब लोग हैं यहाँ पे? यस नो कुछ भी? प्लीज अनम्यूट होके मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अनम्यूट होके रिस्पॉन्ड जल्दी से करें. देयर आर लॉट्स ऑफ यस ऑन द Yes, sir. in the message chat box. Yes, So, sir. okay, I can see there are lots of yes in the chat box also. Yeah, everyone is writing in the chat box. Okay, so whomsoever is not speaking, who can write in the chat box, and that's exactly you are doing. So, okay, fine. So, चलिए mindfulness करते हैं. सॉरी, हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट करते हैं. और उससे पहले एक हैप्पीनेस करिकुलम का अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है माइंडफुलनेस.
और माइंडफुलनेस के अलग अलग प्रकार हैं, वो जब आप करिकुलम, क्योंकि 40 मिनट में हर चीज पूरा का पूरा करिकुलम नहीं हो पाएगा, तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, फ्रेमवर्क और पर्सपेक्टिव पे इसके बात करेंगे कि क्या है। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ही मेजर हिस्सा है, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। ठीक है, माइंडफुलनेस इज सजग होना, वर्तमान के प्रति, अपने प्रति सजग होना, अवेयर होना को माइंडफुलनेस कहते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है माइंडफुल ब्रीदिंग, जो किसी भी हैप्पीनेस का क्लास जब हम शुरू करते हैं तो 1 से 2 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं हम, सांसों पे ध्यान देने की प्रक्रिया। माइंडफुलनेस ध्यान देने की प्रक्रिया है जो सजग होने के लिए अपने प्रति, अपने काम के प्रति जो कर रहे हैं, वर्तमान में जो भी कर रहे हैं उसके प्रति सजग होने की प्रक्रिया है माइंडफुलनेस। और उसी का एक हिस्सा है माइंडफुल ब्रीदिंग, अपने सांसों के प्रति ध्यान देना। कितने लोगों ने सुना है पहले माइंडफुलनेस या किया है? यस नो? जिन्होंने किया है यस बोलें या लिखें। Yes, sir. Okay, okay. So there are quite of people who has done, and yeah, lots of response in the chat also. Mostly yes, yeah. So शायद मैंने ये सवाल पहले पूछा होता तो 1 मिनट और मैं सेव कर पाता सभी का। सभी लोगों को पता है किया है। तो चलिए माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग करने के लिए वी हैव टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। जैसा भी पोजीशन आप कंफर्टेबल लगे आप बैठें, बस ध्यान रखें शरीर को फ्री छोड़ें, कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, शरीर की हड्डी एकदम सीधी हो, ये स्पाइन एकदम इरेक्टेड सीधा हो, ऐसा। एंड अपनी आंखें बंद कर लें, और अगर किसी को आंखें बंद करने में कोई परेशानी है तो वो नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। और अब अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान देना शुरू करें। कंटिन्यूसली इट्स गोइंग इन, कमिंग इन एंड गोइंग आउट। अंदर आ रही है सांस, बाहर जा रही है सांस, कमिंग इन, गोइंग आउट। If in case your mind is diverting or some other thoughts are coming in your mind, don't worry and don't bother too much about those thoughts. That just try to bring your focus back on your breath. अगर मन कहीं इधर उधर भटक रहा है या कोई और सोच आ रही है मन में, तो उसके लिए चिंतित ना हो, अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाने की कोशिश करें। अंदर जाती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। अगले 2-3 सांसों के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। जब भी आप कंफर्टेबल हो, अगले 2-3 सांसों के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। या थैंक यू एवरीवन, आई गेस कि सब लोग वापस आ गए होंगे। सो माइंडफुलनेस जो है या माइंडफुल ब्रीदिंग जो है, ये चेक इन बोलते हैं। किसी भी हैप्पीनेस को क्लास को शुरू करते समय, ये किसी भी क्लास कोई भी काम करते समय ये कर सकते हैं माइंडफुल ब्रीदिंग। आप खुद सभी लोग अगर जिन्होंने वो खुद अपने अंदर डिफरेंस महसूस कर रहे हो कि थोड़ा कामनेस ऐसा फीलिंग आ रहा होगा, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, जिन्होंने किया वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यस और नो। कोई अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा तो कोई बात नहीं है, दीज आर द फीलिंग्स। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ऐसा महसूस आप कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है कोई कह सकते हैं
कि मैंने अच्छे से किया भी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ महसूस रिलैक्सेशन ऐसा नहीं लग रहा। तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। फीलिंग्स हर किसी की फीलिंग्स अलग अलग हो सकती है। तो या लेट्स मूव ऑन। सो स्वागत तो आप सबका है ही, सबसे है। तो बेसिकली ये जो हैप्पीनेस करिकुलम, इसकी ट्रेनिंग कितने लोगों ने पहले ले रखी है? अगर जिन्होंने ली है वो यस बोल दें, बाकी ऑटोमेटिकली आई अंडरस्टैंड कि नहीं ली है, जो साइलेंट होंगे। हैप्पीनेस की किसी भी तरह की ट्रेनिंग हुई है क्या? आजकल स्कूल में जी सर। हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर ने ट्रेनिंग ली होगी, राइट? जी सर। सर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है हमें, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल, पहले तो सभी कोऑर्डिनेटर्स को कराया गया एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्कूल शेड्यूल सभी हाँ हाँ, स्कूल्स के पिछले ये हो रहा है, हो चुका है सर। जी। तो सो वी सभी ऑल आर लोग अवेयर। ठीक है। तो किस कोई ऐसे साथी हैं जो जो अभी तक हैप्पीनेस की कोई ट्रेनिंग नहीं करी है? यानी ज्यादा लोग ने यस लिखा है, तो नहीं वाले भी अनम्यूट करके एक बार बोल दें या चैट में ही नो लिख दें, मैं फिर उस हिसाब से ओके ओके 3-4 responses saying no. Okay. Sir. Okay. Rina. Okay. Okay, fine. So no issue. There are a good number who is saying no, जिन्होंने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं किया। ओके ठीक है, तो मैं उस हिसाब से मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने की है उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, आप कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इमोशंस की बात होती है और हैप्पीनेस की बात होती है, तो वो थोड़ा टाइम लगता ही है। हम अपने बहुत सारे पूर्वाग्रहों से घिरे रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, तो थोड़ा एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। तो जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया है, उस सबके लिए एक सवाल अगर है कि अगर आप बताएं कि आप हमेशा क्या चाहते हैं? हमेशा खुश रहना चाहते हैं या हमेशा दुखी होना चाहते हैं? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, सवाल तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम। म्यूट रह सकते हैं जिनका बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज नहीं है, जो या जिनको लिखना है वो हैप्पी लिख सकते हैं, ऑलवेज हैप्पी। बहुत सारे रिस्पॉन्स आने लग गए। या तो हमेशा खुश रहना चाहते हैं या हमेशा दुख? तो इसका रिस्पॉन्ड, या कोई ऐसे भी हैं जो कभी खुशी कभी दुखी ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे हैं क्या? नहीं, ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अपने समाज के लिए क्या चाहते हैं? अपने समाज के लिए क्या चाहते हैं? ऑलवेज पीस, या कभी पीस कभी नॉट पीस, या नेवर नो पीस? मोस्टली सर रिस्पॉन्सेज हम जी चाहते हैं समाज में भी सभी लोग खुश हों, क्योंकि जब सब खुश होंगे तो उनके साथ ही हमारी खुशी जुड़ी हुई है। अकेले इस संसार में कोई खुश नहीं रह सकता। जी जी। तो अभी समाज में आप शांति चाहते हैं, खुश रहें सब, ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो सब लोग खुश रहना चाहते हैं बेसिकली, समाज के सभी लोग, हम ही लोग समाज हैं, और हम लोग सभी कह रहे हैं कि हम खुश रहना चाह रहे हैं। तो खुश रहना हम सब चाह रहे हैं। तो सवाल है कि जितने भी काम हम कर रहे हैं वो शायद खुश रहने के लिए ही कर रहे हैं, है ना? उसका आधार जो है, जितना भी काम हम कर रहे हैं उसका आधार यही है कि हम खुश हैं। तो बेसिकली ये खुशी है क्या? व्हाट इज हाउ टू अचीव? सभी का एक फंडामेंटल डिजायर है ना, ये सब लोग खुश रहना चाहते हैं। तो ये है क्या? कोई बता पाएंगे क्या? व्हाट इज Yes, हैप्पीनेस? sir, happiness is actually the state of mind and how we adjust with our circumstances and daily challenges of life. So अगर हम सभी परिस्थितियां जो नई नई हमारी लाइफ में आती हैं उनके साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं और खुशियां देना सीख लेते हैं, तो आई थिंक हम खुश रह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही है मैम, या एडजस्ट का मतलब मैनेज करना, कैसे, क्या बात है? So someone is writing in the chat कि it comes from inside. So yeah, no unnecessary tension or stress. Okay, good. Okay, so yeah, so basically जो हम हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, इननेट स्टेट ऑफ माइंड, तो बेसिकली इसकी जब हम बात करते हैं कि ये इनर स्टेट है, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट की बात कर सकते हैं अपनी, अपने खुद में, अपने काम में, अपने सोच में,
दूसरे लोगों के साथ हार्मोनी हो, सद्भाव हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हम सेटिस्फाई रहें, पीस रहे, कंटेनमेंट हो, तो ये शायद हमें लगता है, हम कह सकते हैं कि हम खुश रह सकते हैं। और ये आता कहाँ से? ये अलग अलग स्रोत से आता है। हो सकता है अच्छा खाना, अच्छी फिल्म, अच्छे हम जो चाहते हैं, जो पूरा अपने जीवन से साथ चाहते हैं वो हो रहा है, क्या चाहते हैं वो, तो ये सारे स्रोत हैं, है ना? फूड, हाउस, करियर, मनी, वर्ल्ड, ट्रेवल, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, वो स्रोत है। आप अगर पूछते जाए ना कि वो क्यों करना चाहते हैं, क्यों का सवाल, तो वो लास्ट में आएगा कि हम खुश होना चाहते हैं। आप जैसे मैंने किसी से पूछा कि आपकी इच्छाएं क्या क्या है, तो अच्छा घर, उन्होंने अच्छा घर बोला। मैंने बोला अच्छा घर क्यों चाहिए? ताकि वो रह सके, मतलब अच्छे से रह सके। तो वो अच्छे से क्यों रहना चाहते हैं? तो कोई किसी बोले समाज में भाई थोड़ा अच्छा घर रहेगा, तो ये भी कह सकते हैं स्टेटस अच्छा होगा, थोड़ा वैल्यू रहेगा। ये वो वैल्यू क्यों चाहते हैं? तो जब खुश, तब लास्ट में शायद ये आएगा, मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। अब इसके बाद कोई सवाल नहीं बनता आप क्यों खुश रहना चाहते हैं, ये सवाल वहीं आकर रुक जाता है। तो जहां पे सवाल एंड होता है ना, वो गोल है बेसिकली, वो हैप्पीनेस है, वो चाहते हैं हम। और बाकी जो चीजें हैं ना, वो मीडियम है। तो बेसिकली हम कभी कभी फंसे रहते हैं, यही कॉन्फ्लिक्ट का जो बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही से आता है। जितने भी मीडियम है ना, जितने भी इच्छाएं हैं, वो हमारे मीडियम है जीवन का। गोल तो है खुश रहें, सद्भाव पूर्वक रहें, शांति रहे, अच्छे से रहें। सब लोगों का यही गोल है। अभी आपने बताया कि आप क्या चाहते हैं, तो वो जीवन का गोल है। लेकिन हम कहाँ फंसे रह जाते हैं? हम फंसे रह जाते हैं उस स्रोत में, माध्यम। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हम जब देखते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, तो ये जरूरत पड़ी हैप्पीनेस क्लास की और इन सब चीजों की, इसीलिए कि एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन हम स्किल बेस्ड तो कर रहे हैं, हम बाकी चीजें स्किल सिखा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन वैल्यूज और जो इनर स्टेट को, अपने आप को खुश रखने, आप को समझना, अपने आप को खुश रखना कैसे रखेंगे, उन चीजों पे बात नहीं हो रहा। तब जाके हैप्पीनेस की बातचीत आई कि शुरू से ही बच्चों में इनकलकेट किया, अपने आप को, अपने इनर स्टेट को समझें, अपने भावों को पहचानें, वो अपने कैसे खुश रहते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य क्या हैं वो पहचानें, कैसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, कैसे कमिटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम की संरचना इस प्रकार से हुई कि जीवन के अपने लक्ष्यों को पहचान, सद्भाव पूर्वक जीवन जीना, अपने इनर स्टेट को हम कह रहे हैं वो पहचानना, आपके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं उसको पहचानना। किसी ने लिखा चैट में कि हम एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी से, तब भी खुश रह सकते हैं। तो वो क्या, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी जरूरतें क्या हैं, लक्ष्य जानेंगे तो जरूरत जानेंगे। तब आया कि ये शुरू से एजुकेशन के साथ ही हैंड टू हैंड साथ साथ चलना चाहिए। ये अलग से वैल्यू एजुकेशन और ये सब की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की, एक्सपीरियंस के थ्रू वो बच्चा जाने। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम के द्वारा वो देखिए स्पेस दिया जा रहा है। जो आप लोगों ने जो डेफिनेशन बताया, बेसिकली ये नागराज जी ने भी वही डेफिनेशन दिया था, स्टेट ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्ट, सिनर्जी, और स्टेट ऑफ बीइंग इन एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। तो इसी के बेस पे ये नागराज हैं, इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के फिलॉसफी के बेस पे बहुत सारा कंटेंट इनकी फिलॉसफी से लिया गया है, जो कि हम बात करते हैं। तो अब सवाल ये है, इनर स्टेट है तो, और जो माध्यम है वो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? उस माध्यम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो एक कहा गया है सेंसरी प्लेजर, है ना? तो सेंसरी प्लेजर जो इंद्रियों के द्वारा आता है, कोई अच्छी फिल्म देखें, कोई अच्छा खाना खाएं, तो वो आता है, लेकिन ये क्षणिक होता है। सेंसरी प्लेजर इज अ काइंड ऑफ क्षणिक चीज। आज आपको कोई चीज अच्छी लगी, कल उससे बेहतर अच्छी लगेगी, वो भूल जाएंगे। या आपने पिछली बार कौन सा अच्छा चीज खाया था, ये सोच के आपको कितना आनंद आता है, कम ही आता होगा या नहीं आता होगा। कोई अच्छा अपने आपका जो फेवरेट होगा, तो ये जो ये जो है ना, ये मोमेंट्री होता है। जो सेंसरी प्लेजर होता है ये मोमेंट्री होता है, कुछ मोमेंट्स के लिए रहता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन रहेगा, चला जाता है, फिर ये कुछ नई चीजें उसकी जगह आ जाती है। दूसरा इसी में आता है हार्मोनी इन फीलिंग्स। तो फीलिंग में जब हार्मोनी हो,
स्थिर भाव हो, अच्छा भाव हो, अफेक्शन का भाव हो, केयर, लव, ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो अपने रिलेशनशिप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में, वर्क में, तब ये हार्मोनी इन फीलिंग्स बनी रहती है, लंबे समय तक थोड़ा चलता है। ये हार्मोनी फीलिंग्स में अपने भाव को समझते, अपने भाव के प्रति हित रहते हैं। तो ये चीजें थोड़ा रहता है। और एक है, जब आपके जीवन का आपका लक्ष्य पता है, क्लियरिटी है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, अपने थॉट्स में अंडरस्टैंडिंग है, तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तो ये लंबे समय तक चलता है, ये सस्टेन करता है। इसको इसीलिए सस्टेनेबल हैप्पीनेस कहते हैं। हैप्पीनेस देखा कि इनर भाव है, कोई नॉन कन्फ्लिक्ट हो, क्या हो, और वो इनर भाव है तो वो कैसे समझ में आएगा, वो इनर भाव किसके किसके प्रति होता है, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, प्रकृति के प्रति। इन चार चीजों में हम लोग रहते हैं ना। आप हैं, आपका परिवार है, आपकी प्रकृति है, यही है ना, तो और समाज है। तो यही चार चीजों के आसपास हम लोग रहते हैं और ये रहते हैं। तो इन चीजों के से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं, तो वो ज्यादा चीज देर तक सस्टेन करता है। हार्मोनी अगर फीलिंग्स रिलेशनशिप में अगर हार्मोनी सद्भाव बना हुआ है, आपका अफेक्शन है, फीलिंग्स में लव है, ग्रेटिट्यूड है, विश्वास है, आदर है, तो आपको सद्भाव लगता है हार्मोनी फीलिंग्स में, रिलेशनशिप में। और एक है, जब गोल वगैरह सब पता हो, वो भी है, क्या करना चाहते हैं, अपने जीवन का जुड़ाव देखते हैं चीजों से, आप फोकस कर पा रहे हैं, आप बहुत अवेयर हैं अपने प्रति, आसपास की चीजों के प्रति जो हो रहा है, तो वो सस्टेन करता है, वो हैप्पीनेस लंबे समय तक चलता है। इसी को हम लोग हैप्पीनेस ट्रायड बोलते हैं, और इसी के बेस पे बना हुआ है कि अब यही तीन जो है ना, तो इसमें एक तो मोमेंट्री है, वो तो सब लोग मिल ही रहा है, वो तो सब लोग ले ही रहे हैं, लेकिन हम हार्मोनी इन फीलिंग्स एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस की जो गोल एंड क्लियरिटी बेस जो है, जिसको हम सस्टेनेबल हैप्पीनेस कहते हैं, ये कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, इस पे पूरा का पूरा फोकस्ड है। ठीक है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, एक सबसे जो ऊपर है, जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस की बात हो रही है, दूसरा है हार्मोनी इन फीलिंग, जो डीपर हैप्पीनेस, जो डीप तक अंदर तक वो फील होता है, अंदर तक वो कनेक्टेड होता है, और एक सेंसरी मोमेंट्री प्लेजर की बात हम कर रहे हैं, जो इंद्रियों के द्वारा होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन्हीं चीजों को, कि कैसे सस्टेनेबल हैप्पीनेस जो है, डीपर ये अचीविंग क्लियरिटी एंड गोल, कैसे एक बच्चा अपने गोल के प्रति क्लियर होगा, ये सारी चीजें तक पहुंचेगा, एक इंसान कैसे पहुंचता है यहाँ तक, और डीपर हैप्पीनेस, हार्मोनी इन फीलिंग्स वाला भाव कैसे आता है, इस पे ज्यादातर ये पूरा का पूरा अपना हैप्पीनेस करिकुलम फोकस है, इसका सिलेबस और आउटलाइन जो बनाया गया है वो उस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, ये हैप्पीनेस ट्राइड की बात कर रही है, कि हैप्पीनेस लर्निंग एंड अवेयरनेस की बात हो रही है, हार्मोनी इन फीलिंग्स की बात हो रही है, थ्रू द सेंस इसकी बात हो रही है। तो एज ए करिकुलम अगर हम इसको देखेंगे, इसको 3 मॉड्यूल्स में आपका हैप्पीनेस करिकुलम दिया गया है। हैप्पीनेस इन द सेल्फ, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि आप जुड़े हुए हैं, सेल्फ थ्रू लर्निंग एंड अवेयरनेस, आप अवेयर रहेंगे, सेल्फ के प्रति सीख रहे हैं और अवेयर हैं, तभी आप अपने प्रति, आपको पता लगेगा हैप्पीनेस इन द सेल्फ, आपके अंदर वो हैप्पीनेस की भाव समझ में आएगा। रिलेशनशिप में अगर हैप्पीनेस है, तो वो हार्मोनी फीलिंग्स के थ्रू हम वो रिलेशनशिप के हैप्पीनेस की बात करेंगे, और हैप्पीनेस थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव रहेंगे, तो गोल के प्रति ये सारी चीजें, क्या हो रहा है, आपको करना क्या है, आप सजग रहेंगे हमेशा। तो ये 3 जो पार्ट है, इसके बेस्ड पे ये पूरा का पूरा करिकुलम बेस्ड है। तो सेल्फ और विद इन मी जो अभी मैंने बताया, उसी का ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि कहाँ कहाँ होता है। लर्निंग अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो सेल्फ विद इन मी में होता है, और हार्मोनी इन फीलिंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, वर्क, जितने भी ह्यूमन बींग से हम जुड़े हुए हैं, उसमें आता है। और इन सोसाइटी, जब हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो सोसाइटी में और नेचर के साथ, नेचर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां से हमें सारी पोषण की चीजें और जीने का आधार हमें मिलता है। तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो हमको लंबे समय तक सस्टेन रखना है, नेचर के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है, नेचर को कैसे
प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें आएगी जब समझ बनेगी तो वो आएगा। तो इसके कुछ यूनिट्स हैं कंटेंट के, आप देखेंगे तो इसमें लर्निंग एंड अवेयरनेस की बात हो रही है। जब हैप्पीनेस इन द सेल्फ वाले बात पे करेंगे तो वही माइंडफुलनेस जो मैं बोल रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। तो डेवलपिंग अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस का है। बिकमिंग मोर ऑब्जर्वेंट, आप जब ये करेंगे, आप किसी चीज के प्रति सजग होंगे, ध्यान देंगे, तो आप ज्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे। कंट्रोल ऑफ फोकस एंड अटेंशन, आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो फोकस और अटेंशन पे आपका कंट्रोल होगा, इधर उधर माइंड ज्यादा डाइवर्ट नहीं होगा। हम फोकस बनाए रखेंगे जो हो रहा है, बच्चे भी अच्छे से क्लास में आपकी बात सुन पाएंगे। कहते हैं ना हम लोग कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा, क्लास में आते हो तो अपना दिमाग भी मन भी शांत करके बैठो, क्लास में रखो, और बताते ही नहीं है कि उसका मन और दिमाग कैसे शांत हो। ये जो माइंडफुलनेस है ना, यही तरीका है बच्चों को हम, क्योंकि शुरू से आपको भी आपके टीचर ने कहा होगा, हम भी अभी कह रहे थे कि अपना ध्यान आपका यहाँ है कि नहीं, एक बार सब लोग हेलो बोल दें तो मुझे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम कि वो ध्यान लोग लाएंगे कैसे, तो वो इसका जवाब यही है कि वो कैसे अपना ध्यान क्लासरूम में लाए। तो ये आएगा जब उतना सोचेंगे, खुद के प्रति ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है। तो नोइंग वंस थॉट्स एंड डिजायर, आपके मन में क्या आ रहा है वो सारी चीजें आएंगी, आप सोचेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव आप हो पाएंगे इसके लिए। तो ये कंटेंट की जो पार्ट है उसमें यूनिट 1 में ये रखा गया है, जिसमें हैप्पीनेस इन द सेल्फ वाला जो पार्ट है, 3 हिस्से थे ना। दूसरा हार्मोनी इन फीलिंग्स, जो हार्मोनी रिलेशनशिप की बात करता है, तो क्लासमेट और पीयर्स के साथ ट्रस्ट, अफेक्शन, कोऑर्डिनेशन, एड्रेस, बुलिंग, ये सब इन चीजों पे वो फोकस करके बनाया गया है सारी एक्टिविटी। इन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हो, रिस्पेक्ट हो, गाइडेंस हो, फैमिली में कैसे होगा। तो ये जितने भी रिश्ते हमारे हैं आसपास शायद इसमें कवर हो रहा है एक बच्चे के लिए। तो ये यूनिट 2 का पार्ट है। और यूनिट 3 जो हमने बात बोला था, एक्टिव पार्टिसिपेशन, सीइंग इंटरकनेक्टेडनेस, एक्सप्लोरिंग हार्मोनी, जो हम गोल और इन सब चीज, जीवन के लक्ष्य और क्या करना चाहते हैं, इन सब की बात हम करेंगे। तो सोसाइटी, नेचर, सेल्फ एक्सप्रेस व्यक्त कर पाना, क्योंकि अभिव्यक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपकी फीलिंग्स क्या है और उसको कैसे आप व्यक्त कर पाते हैं। पार्टिसिपेशन इन स्कूल, फैमिली और सोसाइटी, तो ये कंटेंट का यूनिट 3 का हिस्सा है, ये कंटेंट है अपना। तो 3 यूनिट्स में अगर हम देखेंगे तो ये 3 यूनिट्स की जो पेडागोजी होगी वो ऐसी है, ये पेडागोजी ऐसी है कि एक में हम एक तो माइंडफुलनेस की बात हम कर रहे हैं, जिसमें माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज होगी अवेयरनेस के लिए, स्टोरीज होगी रिफ्लेक्शन के लिए, जिसमें हम रिफ्लेक्शन बेस्ड है आपका, और एक्टिविटीज होगी जिसपे हम डेवलप कर पाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, कि जो भी चीजें हो रही है उसको आप अभिव्यक्त कर पाए। तो वो आर्टिकुलेशन, जब आप अभिव्यक्त करेंगे आपके फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, अपने विचारों को, तो वो आर्टिकुलेट करना आपका डेवलप होगा। आर्टिकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये आर्टिकुलेशन स्किल आपका बिल्ड होगा। तो ये 4 पेडागोजी अगर हम मोस्टली देखें तो आता है। इसमें से जो क्लासरूम स्ट्रक्चर और डिजाइन की अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा जो इसका है, ये इन्वायरमेंट स्टेप 1 जो है वो इन्वायरमेंट बिल्डिंग का है, जिसमें ओपननेस हो, कोई जजमेंट नहीं हो, वेलकमिंग इन्वायरमेंट हो। ये सारा इन्वायरमेंट हम तो आजकल नॉर्मल हर क्लास की बात करते हैं, लेकिन इसमें एकदम जरूरी है, इसके बगैर ये हैप्पीनेस की क्लास संभव नहीं होगी। किसी भी तरह का कोई फियर और इन सारी चीजें ना हो, नॉन जजमेंटल हो, हम पहले से ही रहता है ना कि अरे सर ये तो सीख ही नहीं सकता, अरे मैम ये तो सीख ही नहीं सकती या सकता, ये नहीं कर सकता या सकती, ये अच्छा है वो बुरा है, उससे वो अच्छा है, इस तरह का किसी भी तरह का नहीं ये संभव ही नहीं है, ऐसे ही बहुत प्रेशर है, एक और ले आया सरकारी आदेश, एक और आ गया, ये भी करवा लो। ये सारी चीजें अगर रहेगी ना तो नहीं होगा। आपको पहले से कोई जजमेंट नहीं, आपकी जो एक्टिविटी, आप जो किताब जो अभी मैंने बताया ना कि ये करिकुलम है और इसके कंटेंट क्या है, आप अगर उसको ध्यान में रखेंगे, देखेंगे, आप देखिएगा आपको हैंडबुक मिला होगा या मिल जाएगा आपकी स्कूल में, अपने प्रधान अध्यापक से संपर्क करेंगे तो, अगर नहीं मिला होगा तो वहां मिल जाएगा, या जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हैं उनसे संपर्क कीजिए। तो अब देखेंगे कि एक एक एक्टिविटी, हर चीज, चाहे वो माइंडफुलनेस का हो या स्टोरी का हो या एक्टिविटी का हो या एक्सप्रेशन का हो, हर चीज स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया गया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप उसको पढ़ेंगे, आप तैयार, आधे घंटे पहले अगर पढ़ लिया आपने कि क्या है अगले दिन की एक्टिविटी, क्या है स्टोरी, क्या है या माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुल ब्रीदिंग क्या है, चेक इन चेकआउट क्या है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसका कंटेंट, एक तो इन्वायरमेंट बिल्डिंग स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 है कंटेंट, जिसमें स्टोरी, एक्टिविटीज, एक्सप्रेशन ये है।
और फिर स्टेप 3 है रिफ्लेक्शन, शेयरिंग एंड ग्रुप वर्क। बहुत ज्यादा ग्रुप वर्क है, आपको इसमें कोई होमवर्क नहीं देना होता है, कोई रिटन असाइनमेंट कुछ नहीं होता है। इसमें ग्रुप वर्क, ग्रुप में काम करना, एक्टिविटीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, कहानी सुनाना टीचर ये करेंगे। तो ये ध्यान देना होता है। ये होता कब कब है, मेरे ख्याल से टाइम टेबल आपके स्कूल में होगा, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 1-2 लिखा हुआ है, नर्सरी केजी में जहां जहां जिन जिन क्लासों में चलता होगा, तो नर्सरी केजी से और मंडे को नर्सरी से 2 तक में माइंडफुलनेस पूरा का पूरा जो 30 मिनट या 35 मिनट इतने देर का आपका पीरियड है उसमें माइंडफुलनेस होगा। फिर ट्यूसडे एंड वेंसडे को स्टोरी होती है, और थर्सडे को फिर से माइंडफुलनेस होता है, और फ्राइडे एंड सैटरडे को एक्टिविटी होती है क्लास नर्सरी टू सेकेंड में। ठीक है। एंड तीसरी से 8वीं तक में मंडे को माइंडफुलनेस होता है, ट्यूसडे वेंसडे को स्टोरी होती है, थर्सडे और फ्राइडे को एक्टिविटी होता है। इसमें अंतर यही है कि सैटरडे को एक्सप्रेशन होता है, और माइंडफुलनेस जो है वो सिर्फ मंडे को ही होता है। इससे पहले वाले में आपने देखा उसमें सेल्फ एक्सप्रेशन डे नहीं है, अभिव्यक्ति दिवस नहीं है, लेकिन वहां क्या है, माइंडफुलनेस 2 दिन है, और थर्सडे को माइंडफुलनेस है और फ्राइडे सैटरडे को एक्टिविटी होगी। तो ये बेसिकली आपके क्लासरूम का ये स्ट्रक्चर होगा। अब अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत मैं माइंडफुलनेस पे बात कर लेता हूँ कि ये 4 कंपोनेंट है, माइंडफुलनेस, स्टोरी, एक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन। तो माइंडफुलनेस एक तरह से मान लीजिए कि ये लंबी अवधि तक कार्य पर ध्यान देने करने की क्षमता को बढ़ाता है, शैक्षणिक प्रदर्शन बढ़िया बनाएगा, ये बेहतर बनाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी को बेहतर बनाएगा, शांति और खुशी, सस्टेन्ड हैप्पीनेस की जब बात होती है वो बढ़ाएगा, क्रोध कम आएगा, एम्पैथी का भाव बढ़ेगा, वर्तमान में जीने की क्षमता का विकास होगा, सोच समझ कर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। तो ये हो सकता है। इसका हमेशा माइंडफुलनेस को लेकर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी, ये किसी भी तरह का योगा, किसी भी तरह का धर्म, रिलीजन, ये किसी से संबंधित नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है जो ना किसी धर्म ना किसी इससे ये होता है, संबंधित है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें। एक स्टोरी की जब हम बात करेंगे तो स्टोरी में हम देखेंगे कि स्टोरी जो है उसमें कहानियां वास्तविक जीवन से ली गई है, किसी भी तरह का कोई काल्पनिक कहानी नहीं लिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम जो भी करवाएंगे, स्टोरी करवाना किसके द्वारा है, टीचर्स के द्वारा पढ़ के सुना। ऐसा नहीं कि जैसे बाकी भाषा की कक्षा में होता है कि हाँ जी चलो कौन पढ़ेगा, पढ़ के सुनाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है किताब में, आप देखेंगे तो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। तो आपका जितना भी होगा वो सारी चीजें आपको खुद से सॉरी टीचर, एज ए टीचर आपको वो करना होगा। सविता मैम आप म्यूट हो जाएं। तो और इसमें किसी भी तरह का कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। इसमें जैसा कि हम इसमें बता रहे थे कि स्टोरी जो है वो रिफ्लेक्शन के लिए है, कहानी के बाद में कुछ चर्चा के प्रश्न, कुछ चिंतन के प्रश्न दिए गए हैं जिसपे बच्चे के द्वारा चर्चा किया जाएगा समूह में आपस में, और फिर चिंतन किया जाएगा। तो वो फॉर थॉट्स एंड फॉर डिस्कशन देयर आर क्वेश्चंस, तो कहानी के बेस्ड पे ही है, तो वो करवाना बहुत जरूरी है। कहानी तो 1-2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में, 10-5 मिनट में हो जाएगा, बाकी बच्चों से वो शेयर करवाएं। सारे बच्चे क्लास में मौका दें, कभी इसको कभी उसको, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें, ये सारी बातें होती है। एक्टिविटी की जब हम बात करेंगे तो ये एक्टिविटी भी हो सकने वाली है। जो भी क्लासरूम में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आसपास, या छोटे छोटे कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, वो सभी अवेलेबल होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज के साथ ये करवाने लायक है। कुछ कुछ समूह में हो सकता है, कुछ कुछ एक पेयर में हो सकता है, कुछ कुछ अकेले भी हो सकता है। ऐसी एक्टिविटीज की गई है, और अगेन एक्टिविटीज के बाद भी आपको डिस्कशन के प्रश्न होंगे, सोचने के लिए प्रश्न होंगे, तो ये करना है। एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन हम सैटरडे को, इसका दिन है 3 से 8, क्लास 3 to 8 है, लेकिन जैसे ही इस सैटरडे को हमने एक्सप्रेशन करवाया तो उसी सैटरडे को अगले सैटरडे के लिए कौन सा
बिंदु होगा जिसपे बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति देनी है, तो वो उसी समय बता दिया जाता है। और हर दिन हैप्पीनेस की क्लास में एक्सप्रेशन के लिए जो आपने पॉइंट बताया था, टॉपिक बताया था, उस टॉपिक को रिमाइंड कराते हैं कि तब इस सप्ताह ये हो रहा। तो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या है कि कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ सिचुएशन दिया गया है, उसमें बच्चे को सोचना है। तो इसमें बेसिकली सम्मान, साहस, बच्चों का जो हमने अभी देखा था वो वही चीजें, ममता, प्यार, ग्रेटिट्यूड, ये जो चीजें हैं उसके आसपास ही ये सारी चीजें रहती है। तो बच्चे को एक टॉपिक दे दिया है, एक एंगल दे देते हैं कि आप इस पे सोचिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा पूरे सप्ताह, और फिर वो क्या फील कर रहे हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो एक्सप्रेस करते हैं आपको। इसलिए एक्सप्रेशन डे होता है सैटरडे को। तो ये 4 मेजर पार्ट्स हैं हैप्पीनेस को, जो जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा हैप्पीनेस क्लास हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो यही रोकता हूँ। मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू मैंने कोशिश की आपको पिछले आधे घंटे में समझाने की। कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। बताइए। सर ये जो हैप्पीनेस की स्टोरीज बुक्स में दी हुई हैं, इन स्टोरीज को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए कभी कभी मतलब आ जाते हैं, कुछ इंसिडेंट आ जाता है माइंड में, बच्चों के में भी, टीचर के में भी, तो हम कुछ और स्टोरीज इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, इसमें ये कहा गया है बेसिकली कि आप जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही सोच समझ के ये डाला गया है पहले से ही। तो अनावश्यक बहुत ज्यादा ना जोड़े ना घटाएं, कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। ठीक है, एक चीज तो ये है। लेकिन टीचर को इतनी स्वतंत्रता भी दी गई कि लग रहा है कि कुछ इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट इसी से मिलता जुलता है, तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा पार्ट ये है कि आप शुरुआत करेंगे तो एज ए टीचर आप खुद अपना अनुभव शेयर करेंगे। जैसे चर्चा के प्रश्न, चिंतन के प्रश्न कुछ होंगे ना, तो बच्चों से पहले अपने आप शेयर करेंगे, तो आप उसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने अनुभव के तौर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल? कुछ सवाल हो, आपके कुछ विचार हो तो आप रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई सेशन है नहीं, तो हालांकि 1 बजने वाला है, लेकिन सेशन और कोई आगे है नहीं, तो हम इसको 1-2 मिनट 5 मिनट आपके कुछ सवाल हो तो हम रख सकते हैं। सर ये हैप्पीनेस करिकुलम से रिलेटेड जो हमारी क्वेरीज थी वो तो हमारी काफी हद तक सॉल्व हो गई हैं, रिजॉल्व हो गई हैं, और बाकी हम जब बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज करते हैं तो वो डे बाय डे हम समझ रहे हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारी नॉलेज को भी, और प्रैक्टिकल ये जो फीलिंग्स हम बच्चों के अंदर जनरेट करने की बात कर रहे हैं, या अपने अंदर चेंजेस हम अनुभव कर रहे हैं, सो उसके लिए मैं आपको भी बहुत थैंकफुल आपके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। और ये हैप्पीनेस करिकुलम बनाने के लिए जो डिसीजंस लिए गए, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट डिसीजन एंड वेरी ग्रेटफुल टू द टीम हैप्पीनेस। यही बोलना है, क्योंकि हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ना सिर्फ बच्चों में बट बड़ों में भी आ रहे हैं। वेरी ट्रू रितिक, इसी तरीके से अगर हम लोगों में चेंजेस आएंगे तभी आई थिंक वो चेंजेस हम बच्चों में ला पाएंगे। बिल्कुल मैम, बिकॉज वी हैव टू बी एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो ये जो अपना हैप्पीनेस करिकुलम है, यही है, जैसे सर अभी बता रहे थे कि जो स्टोरी है वो हमें हैप्पीनेस करिकुलम की ही क्यों सुनानी है, क्योंकि ये हमने समझा कि जैसे हमारे टाइम में हम महाराजा हरिश्चंद्र की स्टोरी पढ़ा करते थे, श्रवण कुमार की स्टोरी पढ़ा करते थे, तो बच्चों ने श्रवण कुमार को नहीं देखा और हरिश्चंद्र जी को भी नहीं देखा, बट वो इस समय में अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देख रहे हैं। तो वो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे समाज के बीच से लिए गए कैरेक्टर हैं, सो वो ज्यादा बच्चों के माइंड में क्लैरिटी कर पाते हैं। दिस इज द ओनली एम कि हमें क्यों यही स्टोरी सुनाने की कोशिश करनी चाहिए और डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करने और उनके बहुत ही सम्मान के साथ उनके भी विचारों को सुनना है। थैंक यू एवरीवन। जी मैम, थैंक यू। कोई सवाल और किसी साथी के, जो नए साथी जिन्होंने आज पहली बार, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे
काइंड ऑफ ओवरव्यू कि ये हैप्पीनेस है क्या, करिकुलम क्या है। तो आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, कोई नए साथी जिन्होंने पहली बार इसको देखा हो या सुना हो। थैंक यू सो मच सर। अभी आई थिंक और हमारे डाउट्स आने वाले होंगे तो हम मतलब अभी पूछेंगे, अभी सादा डाउट्स है नहीं। ये ठीक है। हैप्पीनेस करिकुलम आगे भी कंटिन्यू होगा कि अभी मतलब ये आज ही के लिए था? नहीं, आपके इसके तो आपके ज़्यादा मतलब बेस्ट डाइट पर्सन तो हैं, आपके डाइट्स के जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं या आपके डीडी लोग ये बता पाएंगे, लेकिन मैं ऐसे बता दूं क्योंकि मैं हैप्पीनेस टीम के साथ जुड़ा हुआ हूं। पहले मैं SCRT में था, अभी एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फाउंडेशन हैप्पीनेस के लिए। तो मोस्टली ये है कि ये हमेशा देखिए ट्रेनिंग्स अगले साल फिर आपकी इन सर्विस की ट्रेनिंग होनी है, तो ट्रेनिंग्स पे काफी फोकस है और हैप्पीनेस को लेके भी काफी फोकस है। तो आपके स्कूलों में जिनकी ट्रेनिंग अभी नहीं हुई है किसी कारणवश, हर स्कूल में एक हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर है, वो समय समय पे वो उनके थ्रू भी होते रहेगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी ट्रेनिंग्स होते रहेगी जब भी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होगा। तो वो शेड्यूलिंग का मसला है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये आखिरी है, आखिरी कुछ नहीं होता, ये शुरुआत है मात्र। जी, वो एक्चुअली ये मेरा मात्र क्वेश्चन है कि मैं अपने स्कूल की हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हूँ और आई एम द लाइक न्यू ज्वाइनी ऑल्सो, तो मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बीच बीच में पॉपअप करते रहते हैं। कोई बात नहीं मैम, आप सवाल अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। आपके जो फैसिलिटेटर होंगे आपके जोन में उस समय जो अभी पिछले महीने जो आपने ट्रेनिंग करी होगी उनसे पूछ सकते हाँ हैं। जी। मुझसे भी पूछ सकते हैं आप। अगर मैं चैट में अगर लिख दूं अपना नंबर, तो हैप्पीनेस से संबंधित अगर कुछ होगा तो आप कोई भी मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज अगर होगी तो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं अपना नंबर यहाँ नीचे लिख दिया चैट में, किसी को अगर चाहिए हैप्पीनेस को लेके तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके सो मैम, थैंक यू पन्ने सर। जेंटलमैन जी। हाँ, थैंक यू पन्ने सर। तो अभी हमारे हैप्पीनेस से रिलेटेड थोड़ी क्वेरीज जो थी वो शायद सभी की खत्म हो गई होंगी। तो आज के लिए हम अपना सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम फिर से सुबह 9:30 बजे जो है अपना स्टार्ट करेंगे। प्लीज सभी आप जो है अपना सेशन वाइज फीडबैक आज ही भर दीजिएगा, ताकि जो भी आपका सेशन में हुआ वो आपको याद रहे और आप एक ठीक से फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर सके। थैंक यू ऑल। सो सी यू टुमारो एट 9:30. You may leave now. Thank you. Thank you, ma'am.